the lesson number 3 of your class 8 English, that is a girl with a basket. So let's begin with this lesson. I had left New Delhi for the Himalayas. मैंने न्यू दिल्ली लेफ्ट कर दिया कहाँ जाने के लिए, हिमालयाज जाने के लिए. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. पहले मैं बरेली जा रही हूँ ट्रेन से, फिर जाऊंगी कार से रानीखेत. An old British Army hill station located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. एक कहाँ पे जाऊंगी मैं, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन पे जो कहाँ लोकेटेड है, 6,000 फुट रिज पे लोकेटेड है. कहाँ के अपोजिट, 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालयास के अपोजिट. The train was slow, जो भी ट्रेन थी वो स्लो थी, and it stopped at all the way station. वो हर स्टेशन पे स्टॉप करती थी, हर स्टेशन के रास्ते में स्टॉप करती थी. At every stop I swung open the door. हर स्टॉप पे मैं रुकती थी, मैं जाती थी, अपने डोर ओपन कर दी थी अपने कंपार्टमेंट्स के, and walk the platform, और प्लेटफॉर्म्स पे वॉक करती थी. The platforms were packed with people. जो प्लेटफॉर्म्स थे वो पैक थे किससे, people से. The people were Hindus, Muslims, Sikhs, soldiers, merchants, priests, porters, beggars and hawkers. सब हर कोई था वहाँ पे. priests भी थे, merchants भी थे, hawkers भी थे, Sikhs, Muslims, soldiers, everyone. Almost everyone was barefooted and dressed in loose white garments. हर कोई barefooted था, हर कोई नंगे पैर में ज्यादा था, और किसमें ड्रेस था, loose white garments में ड्रेस थे. I would ask at least 3 people before I could find me who spoke English. मैं और भी लोगों से पूछती, बट मैं ये देख रही थी कि कौन बोल सकता है इंग्लिश. We would talk world affairs and every major topic. हम किस बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और हर मेजर टॉपिक्स के बारे में. The news of the day produced. In this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation. इस वे में मैं फील ले पाई थी पल्स ऑफ द नेशन की. Checking opinion against official attitudes and reports. जो हम opinions check कर रहे थे official reports के और attitudes के लिए. The route led through one of the richest of India's agricultural areas. जो route से वहाँ से कैसे निकलता वो जा रहा था, एक इंडिया के richest agricultural area से निकल के जा रहा था. This was the plain of the Upper Ganga River. ये क्या था, एक plain था वहाँ का, Upper Ganga River था. 1,000 feet above sea level, but tropical. जो कितना ऊपर था, 1,000 feet था, above था sea level से, but क्या था, tropical था. The Ganga was brown silk. गंगा किस कलर की थी, brown silk कलर की थी, flooded with flood waters. It overflowed inundating thousands of acres of rice. वो overflow करी थी, flood आ रहा था, क्या खराब करते हुए, thousands of acres of rice को खराब करते हुए. To the north were jungles, great expanses of grass higher than a man's head, an unbroken expanse of an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, and pythons and cobras. North में क्या था? There were jungles, there were expanses of green, higher trees, और उसमें क्या थे? Homes थे किसके? Tigers के, elephant के, pythons के, and cobras के. Everywhere else there was flat land running to the horizon. Flat land था हर तरफ, but dotted here and there were by the sacred banyan trees or by rows of purple trees shaped like elms and having thick twisted trunks. और rows कैसी थी उनकी, dotted trees थी, उनके horizon roads थी, and they were sacred. और वहाँ पे क्या थे, sacred banyan trees थे जो row में थी, in the row of purple trees. शेप कैसी थी उनकी, elms की तरह शेप थी, और having thick twisted trunk, उनकी thick twisted trunks थी. Hot humid air was moving in from the southwest. Southwest से hot humid air चल रही थी. Monkeys come of their mothers with babies clinging to them and riding underneath trunk of trees at the station. जो monkeys थे वो वहाँ पे थे, वो अपनी mothers के साथ उनके ऊपर एकदम hang थे और कहाँ swung कर रहे थे, trees की branches पर swung कर रहे थे स्टेशन की. Looking for food, क्या ढूंढ रहे थे वो, food ढूंढ रहे थे. The villages we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung, जिसकी walls किससे बनी हुई थी, cow dung से और water से और mud से mix हो गई. Their peaked roofs were thatched bungalows of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Houses कैसे बने थे, huts की तरह बने हुए थे, किससे बने हुए थे, bamboo poles से. स्ट्रेच का उसके ऊपर क्या था, ग्रास टाइट थी और बैम्बूस के ऊपर
That day, the pumpkin vines that grew over them were in bloom. जो pumpkin vines थे जो उनके ऊपर grew कर रहे थे वो bloom में थे. Trailing streaks of yellow over drab walls. जो trailing streaks yellow की उन drab walls पे. At one station, my routine of talking with the people was interrupted. मैं हर station पे बात करती थी people से, but एक station पे क्या हो गई? Interrupt हो गया था मेरा routine. How? As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं उतरी एकदम से group of young children मेरे आसपास आ गए थे. They were selling baskets. क्या sell कर रहे थे? Basket sell कर रहे थे. Hand woven reed baskets with simple designs and patterns. उन पे reed baskets थी, hand woven baskets थी. They held the basket quite high, shouting words I did not know how, but conveying unmistakably their desire. वो मुझे समझ नहीं आया था वो क्या बोल रहे थे, बट मैं उनका अनमिस्टेकेबली उनकी डिजायर को समझ पा रही थी. These were refugee children. So क्या थे? एक refugee children थे. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled out of their roots and changed their residence. जब partition हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत सारे लोगों के घर खत्म हो गए थे. वो जहाँ उनकी रूट्स थी वो खत्म हो गए थे, चेंज हो गए थे, उनकी रेजिडेंसेस चेंज हो गए थे. They were refugee children. 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million people ने पाकिस्तान छोड़ दिया तो इंडिया आ गए थे. Driven by the fear of religious fanaticism. किसके driven थे वो? Religious fanaticism से driven थे. They were poor people to start with. Poor people थे क्योंकि उन्हें start करना था. They were poorer as they began their long trek. Poorer भी थे क्योंकि वो बहुत दूर से चल के आए थे. For all they could carry, but bought a bit of food. वो क्या एक bit of food भी carry नहीं कर पाए और कुछ अपने belongings ले आए थे बस. Soon they were out of food. जैसे उनका food खत्म हो गया था. A few days after they started, they began to fall by way aside from weakness of hunger and died where they fell. अब उनमें थोड़े दिन बाद वो भूख वहीं से मरने लगे थे और वहीं पे मर जाते थे जहाँ पे गिर जाते थे. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. जो children sell कर रहे थे baskets को उसके यहाँ थे son थे और daughters थे उन refugees के. They or their parents or relatives have gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. तो वो कौन थे? उनकी जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स थे वो गैदर होते थे सिटीज में. क्या लगाते थे? स्टॉल्स लगाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे सिंपल आर्टिकल्स को, ट्राई करते थे सिंपल लिविंग के लिए मार्केट में. सो ऑलरेडी मार्केट जो थी वो ऑलरेडी ओवरक्राउडेड हो गई थी. They lived in clothes and grass sheds that lined the street. वो कहाँ रहते थे? वो खाली क्लोथ्स पे रहते थे और ग्रास शेड्स पे जो स्ट्रीट पे लगे होते थे. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed. जो agricultural family की annual income थी वो exceed नहीं हो रही थी. On an average $100 a year. खाली क्या आ पाता था? एक साल में $100 आ पाते थे. The average unskilled laborers थे जिनको कुछ नहीं आता था, makes 30 cents a day or less than $2 a week. पूरे दिन में 30 cents बना पाते थे या खाली $2 पूरे वीक में. There is one meal a day. क्या होता था? one meal मिलती थी उन्हें एक डे में. An onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk. एक बाउल मिलता था पल्स का और मिल्क का. Perhaps a bit of goat cheese. थोड़ा सा goat cheese मिल जाता था उन्हें. No tea, no coffee, no fat, no sweet, no meat. ना कोई टी मिलती थी, ना कोई कॉफी मिलती थी, ना फैट मिलता था, no sweet, no meat. $100 a year is not $2 a week. $100 a year मिलते थे, $2 a week भी नहीं होते वो. Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. वो जो स्मॉल अमाउंट था वो बहुत मुश्किल कर देता था कि पीपल उससे वो स्मॉल बास्केट्स बाय कर पाए. That no doubt is the reason these children are descended on me like locusts. जो ये descendants लगते हैं children की किसकी तरह? locusts की तरह. I an American was doubtless. मैं क्या हूँ? मैं एक American हूँ. मैं doubtless to the most promising market they had seen. I bought one tiny basket for a few ananas. मैं क्या लाई? Tiny basket लाई हूँ few ananas से. Another fruit basket for a bit more. एक और fruit basket लाई हूँ मैं
a beautiful waste paper basket, एक beautiful waste paper की basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, एक lovely sewing basket लाई हुई 1 rupee की, a few fans or for an anna or 2 a piece, एक few fans लाई होने के लिए 2 a piece. My arms were filled and I had spent not 50 cents. और मेरे हाथ भर गए थे और मैंने खाली 50 cents भी spend नहीं करे थे. The children started shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded. Children मेरे आसपास आ गए थे और मैं prisoner बन गई थी, completely surrounded, unable to move. मैं move भी नहीं कर पा रही थी. The most diligent aggressive vendors was a beautiful girl of 9. एक diligent aggressive vendor थी, वो कौन थी? Beautiful girl थी 9 years की, right in front of me, जो एकदम मेरे सामने थी. She had a lovely basket with handles. उसके पास एक lovely basket की handle के साथ, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. या तो से हाँ 30 cents चाहिए थे या 1 रुपये चाहिए था या half चाहिए था रुपये का. She was an honest trader थी, लीडर थी. There were tears in her eyes. उसे बहुत जरूरत थी. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tongues that would bring my heart. उसने बहुत ज़्यादा plead करा, उसने beg करा बहुत ज़्यादा, मेरा हाथ में भी bring that begged in tones that would bring my heart, any heart, किसी के दिल में दया आ जाती उसके लिए. My arms were full. मेरे हाथ तो full थे. I had no room. मेरे पास कोई room भी नहीं था. Let alone any need for another basket. Balancing my baskets and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents, in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. मैंने अपने साथ सामान को अपने लेफ्ट हैंड में पड़ा, अपनी पॉकेट में हैंड डाला, तो उसे क्या निकले 15 cents निकले. फिर मैंने which I deposited in the basket, मैंने बास्केट में डिपॉजिट करे. that the young girl held, the young girl ने मुझे दी थी imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. और but मैंने बोला कि मेरे पास बास्केट मुझे नहीं लेनी, but उसने दे दी मुझे as a substitute. I realized that once what offense I had given. The crystal one of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. अगर मैंने उससे बास्केट नहीं ली तो मेरा मनी वापस कर दी थी, जो एकदम भूखमरी की उस पे starvation पे है. There was only one thing I could do. मैं बस एक ही चीज कर पा रही थी कि मैं बास्केट खरीद लूँ उससे. I bought the basket. She wiped her tears. जैसे मैंने उससे बास्केट खरीद ली, उसने अपने tears पोंछे, smiled and danced down the platform. और प्लेटफॉर्म से उतर गई. Headed off some grass hut that would have to at least 30 cents that night. Grass hut की तरफ चल गई. क्या लेके at least 30 cents लिए उसने उस night. I told the story to Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. और मैंने ये स्टोरी किसको बताई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई. I told him it was one reason I had fallen in love with India. एक यही reason है जिससे मैं love में fallen हो गई हूँ इंडिया में. The people I saw in India, those in the village as well as those in high offices, have both pride and lively sense of decency and citizenship. जो people high offices में भी है, जो normally villages में भी रहते हैं, उनपे क्या दोनों पे pride है, lively sense of decency है और citizenship है. They also have a passion for independence, और उनमें passion भी independence के लिए. This beautiful child born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of warm soul of India. जो एक लड़की थी, child थी, वो squalor से poverty में थी, वो पढ़ी हुई भी नहीं थी. She was uneducated in both grammar में भी और manners में भी, but had given me a glimpse, मुझे परछाई दिखा दी है किसकी? Warm soul of India की. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.